Hello friends, hope you all are fine and doing well. Stay home, stay safe. In last lecture we discussed about the anesthetics, general anesthetics. Today we'll discuss very important topic, opioid analgesics. You know, there is a difference. Remember friends, there is a difference in terms analgesics and anesthetics. The drugs which are used during the surgeries, during the operations to make the patient unaware of pain. They causes the reversible loss of consciousness. उसके अंदर patient unconscious होता है. वो है general anesthetics. Analgesics, they reduce the pain without affecting the consciousness. Analgesics, medications that reduce the pain without causing loss of consciousness. Generally they are also known as the painkillers. A common person, layman tells them as a painkillers or known as the pain modulator. So analgesics which relieves the pain without affecting the consciousness. Opioids, why they are known as the opioid analgesics? Because any drug which binds to the opioid receptors, because they act on the opioid receptors, they are obtained from the poppy, opium poppy, Papaver somniferum. Therefore, they are known as the opioid. Previously, they were known as the narcotic analgesics, but now they are known as the opioid analgesics. So, any drug which binds to the opioid receptors, they are known as the opioids. Opiates, drugs derived from the opium, natural or semi-synthetic drugs which are obtained from the opium, poppy opium somniferum. Narcotics, क्यों उसको नार्कोटिक्स कहते थे? ड्रग्स डिराइव्ड फ्रॉम ओपियम और ओपियम लाइक कंपाउंड्स जैसे मॉर्फिन है ना, विथ पोटेंट एनाल्जेसिक इफेक्ट्स associated with significant alteration of mood and behavior. ये याद रखो, significant alteration of mood and behavior and with the potential for dependence and tolerance. ये क्या करते हैं ड्रग्स? नार्कोटिक्स वो ड्रग्स उसे कहते हैं जो लीगल एप्लीकेशन which causes the dependence, which causes the production of tolerance, which causes the alteration in mood and behavior. Therefore, they are known as the narcotics. है ना, नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. जो ड्रग्स वगैरह नार्कोटिक ड्रग्स कहते हैं इसको, तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक वहाँ है. लेकिन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, अब ये टर्म लूजली अप्लाई करते हैं. नार्कोटिक जनरली ओपियोइड एनाल्जेसिक्स कहा जाता है. Thus, opioid analgesics obtained from the poppy opium acts on the opioid receptors and causes and relieves the pain without affecting the consciousness. So, what is pain? Pain is an unpleasant sensory and emotional experience which is associated with the टिश्यू डैमेज, है ना. टिश्यू इंजरी, टिश्यू डैमेज होने के बाद जो अनयूजुअल अनप्लीजेंट सेंसरी परसेप्शन होता है उसे कहते हैं पेन. सो क्लासिफिकेशन ऑफ पेन बाय ड्यूरेशन, बाय ऑनसेट एंड ड्यूरेशन. सो एक्यूट पेन जो अचानक होता है, सडन इन ऑनसेट, यूजुअली सबसाइड्स वंस ट्रीटेड. बट क्रोनिक पेन परसिस्टेंट एंड रिकरिंग, जो लंबे समय तक चलता है, धीरे धीरे बहुत देर तक रहता है, उसे कहते हैं क्रोनिक पेन. ऑफन डिफिकल्ट टू ट्रीट, जनरली जल्दी से ये ट्रीट नहीं होता. क्लासिफिकेशन ऑफ पेन और उसका सब क्लासेस क्या है? सोमैटिक पेन, विसेरल पेन, सुपरफिशियल, वस्कुलर, रेफर्ड, न्यूरोपैथिक, है ना. सोमैटिक पेन जो बॉडी वॉल्स, आपके जो स्किन, मसल्स, जॉइंट्स, यहाँ पर जो पेन होगा, सेंसेशन ऑफ पेन होगा, उसे कहते हैं सोमैटिक पेन. विसेरल पेन डीप सीट जो विसेरल ऑर्गन्स पे हैं, जैसा फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स का पेन होता है, या फिर आपके जो किडनी स्टोन का पेन जो होता है वो विसेरल पेन है ना. डीप सीटेड रहा तो डीप विसेरल पेन कहते हैं उसको. सोमैटिक पेन जो ऊपर स्किन में जब ऐसा जो चुभने जैसा प्रिकिंग लाइक जो पेन होता है स्किन वगैरह मसल्स ऊपर बॉडी वॉल में, उसे कहते हैं सोमैटिक पेन. जो डीप है विसेरल पेन. सुपरफिशियल जैसे ऊपर है ना, स्किन के ऊपर, वस्कुलर पेन. रेफर्ड पेन है ना, एक्चुअली जहां पर पेन हो रहा है ना, जनरली आपकी जो हार्ट अटैक में, मायोकार्डियल इस्चेमिया वगैरह में होता है इन्फेक्शन, हार्ट में पेन है, लेकिन बट विच इज परस्यूड इन द अनदर साइड. एक्चुअल प्लेस ऑफ इंडक्शन इमरजेंस ऑफ पेन, एक्चुअल साइड पेन की अलग है, लेकिन एहसास महसूस दूसरी जगह पर हो रहा है, उसे कहते हैं रेफर्ड पेन. उसे क्या कहते हैं? रेफर्ड पेन. सो जनरली दिस रेफर्ड पेन इज मिस इंटरप्रेटेड एज कमिंग फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्चुअल साइट ऑफ पेन. न्यूरोपैथिक पेन, जो नर्व्स, आपके जो पेरिफेरल नर्व्स वगैरह, नर्व्स डैमेज हो रहा है, नर्व्स से इमर्ज हो रहा है ना. न्यूरोपैथिक पेन, कैंसर, साइकोजेनिक, अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पेन. Vascular pain, as I told you, vascular pain, neuropathic pain, superficial pain result from injury to the peripheral nerves, fibers or damage to the sinus, known as the neuropathic pain. Pain transmission gate theory, ये important है. Mechanism of pain, pain कैसे perception होता है? When we understand the theory of perception of pain, then we can easily understand how the different drugs they are used, they are act as a different mechanism, different places to relieve the pain. So most common and well described theory is the gate theory for the perception of pain. Uses the analogy of gate to describe how impulses from damaged tissue are sensed in the brain. The pain transmission, in this case, the tissue injury causes the release of different mediators, bradykinin, histamine, potassium, prostaglandins, serotonin. So thus substances stimulate nerve endings
starting the pain process. ये substances क्या करते हैं? They stimulate the nerve endings which causes the starting of sensation of pain. So for pain transmission there are two types of nerve fibers जो है, there are two types, A fibers and C fibers. Thus nerve fibers transmit the pain to the higher centers of the brain. A fibers, C fibers. A fibers, they are having the myelin sheath, large fiber size, conduct the fast impulses, inhibit the pain transmission. A fibers inhibit the pain transmission, sharp and well localized. In case of C fibers, no myelin sheath is present, small in size, conduct slowly, facilitate the pain transmission. The C fibers causes the facilitation of pain transmission. Types of pain relate to the proportion of the A and C fibers in the damaged areas. Thus, pain fibers enter the spinal cord and travel up to the brain. The point of spinal cord entry is the dorsal horn, and anterior horn, posterior horn, dorsal horn. The dorsal horn is the location of the gate. This gate regulates the flow of sensory impulses to the brain. Closing the gate stops the impulses. ये कहाँ पर है? देखो डॉर्सल हॉर्न के वहाँ पर जो है गेट थ्योरी के हिसाब से डॉर्सल हॉर्न पर गेट है. Thus gate regulates the flow of sensory impulses to the brain. स्पाइनल कॉर्ड में है ना. Closing the gate stops the impulses. अगर स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल हॉर्न पे गेट क्लोज होता है तो stops the impulses of perception of pain. If no impulses are transmitted to the higher centers in the brain, cerebral cortex में नहीं जाएंगे, there is no pain perception. Activation of large A fibers closes the gate, inhibits the transmission to the brain, limits the perception of pain. Activation of small B fibers opens the gate, allows impulses transmission to the brain. There will be the perception of pain. Gate innervated by the nerve fibers from brain, allowing the brain some control over the gate. Allows the brain evaluate, identify and localize the pain. है ना. ब्रेन जाने के बाद दर्द कहाँ पर हो रहा है ना, कितना है, कैसे कितना उसकी इंटेंसिटी कैसी है और अभी क्या स्टेप्स लेना है, ये सारी चीजें क्या करेगा? ब्रेन कंट्रोल करेगा. सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये सारे परसेप्शन होंगे. कंट्रोल द गेट बिफोर द गेट इज ओपन. The T cells control the gate level. Gate have a threshold. Impulses must overcome threshold to be sent to the brain. Threshold levels वगैरह हम डिस्कस किए थे. Then body has endogenous neurotransmitters, enkephalins, endorphins, dynorphins. Those are the natural painkillers in your body. And those are the endogenous painkillers which are present in your body, in your brain, produced by the body to fight the pain, bind to the opioid receptors, inhibit the transmission of pain by closing the gate. याद रखो ये endorphins, enkephalins, and dynorphins. Those are the natural painkillers. So अक्सर क्या, तो जब दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो हम क्या करते हैं? जहाँ पर दर्द है उसको थोड़ा रब करते हैं, थोड़ा मसाज करते हैं. तो व्हाट हैपन? रबिंग अ पेनफुल एरिया विथ मसाज और लिनीमेंट, है ना. कोई लिनीमेंट वगैरह लगाते हैं, आयोडेक्स है या फिर पैनल जैसे क्यूब वगैरह, जो डाइक्लोफेनाक जो ट्यूब्स वगैरह मिलते हैं वो लगाते हैं. तो क्या होता है? रबिंग अ पेनफुल एरिया विथ मसाज और लिनीमेंट स्टिमुलेट्स लार्ज सेंसरी फाइबर्स. जो ए फाइबर्स थे उसको स्टिमुलेट किया जाता है, लार्ज सेंसरी फाइबर्स स्टिमुलेट होते हैं. उसकी वजह से क्या होता है? व्हाट इज रिजल्ट? गेट क्लोज्ड, रिकॉग्निशन ऑफ पेन रिड्यूस्ड. सेम पाथवे यूज बाय द ओपिएट ड्रग्स. ओपिएट जो एनालिसिस है वो ऐसे यूज किए जाते हैं, वहाँ पर ऐसी यही पाथवे यहाँ पर यूज करते हैं. सो सी हियर, दिस इज द pathway which is used, है ना. This is the gate theory, है ना. This is small fiber, this is large fiber, है ना. So inhibitory neurons are present. Those are the C fibers, those are the AB fibers. Projection neuron, strong activation. See here, A fibers reduce or weak activation. यहाँ पर जब यहाँ पर नीचे जो A fibers है, A fibers they causes the reduced or weak activation. See here, this is the theory. When there is a perception of pain, it will come here. This is the dorsal horn. From the dorsal horn, it goes to the thalamus. Thalamus के ऊपर perception होता है. Thalamus convey the message to the higher centers in the brain. Now the higher center sends the pain and process it. What action to be taken? So opioid analgesics, pain relievers that contain the opium derived from the opium poppy or chemically related to the opium. Narcotics, very strong pain reliever. Narcotics तो हमने अभी discuss किया था. What are the narcotics? Why they are known as the narcotics? So these opiates or opioid alkaloids, they are obtained from the poppy opium, है ना. poppy और somniferum उसका जो कॉग्निशन पढ़ेंगे आप, है ना. यहाँ तो सीड्स होते हैं, उसको exudates, है ना, कट करके उसके exudates collect करते हैं and they are used as a drug. So see here, poppy to opiates. See here, the incision, then they are collected and now those are the drugs, morphine, codeine, naltrexone, etc. Those are the poppy drugs. So opium history, Friedrich Serturner, a German pharmacist, है ना, isolated morphine in 1803 and named it after the Greek god of dreams, Morpheus, है ना. Morpheus इसीलिए इसका नाम पड़ा morphine.
So this is the classification opioid analgesics: natural opium alkaloids, morphine and codeine; semi-synthetic diacetyl morphine, also known as the heroin, and pholcodeine; synthetic opioids: phenylpiperidines, pethidine, fentanyl and its congeners like sufentanil, remifentanil; then phenylheptylamines, methadone, benzomorphone, morphans, pentazocine. Those are the different drugs which are used as a opioid analgesics. So what is the mechanism of action of this narcotic analgesics or opioid analgesics? So generally they acts on the dorsal horn of the spinal cord, and sometimes generally they act on the receptors which are responsible for perception of pain. Opioid analgesics, the main mechanism of action binds to the receptors or inhibitory fibers, and stimulate them, preventing stimulation of the gate, prevent the pain impulse transmission to the brain. So they act on the receptors. Which are the main receptors? See here, 3 types of opioid receptors are there: mu, kappa and delta. Those are the receptors which are located in the brain. On those receptors, thus opioid analgesics acts and leads to the analgesia. So these opioid receptors, mu, kappa, delta, they are the G protein coupled receptors. They fall under the family of G protein coupled receptors. We know that G proteins, the second messengers, the physiological mechanisms are the chain of mechanisms are there which activates those receptors and produces the physiological responses. So opioid receptors acts on G protein coupled receptors. The opioid receptors are type of the G protein coupled receptors which inhibit the adenylyl cyclase. Adenylyl cyclase को inhibit किया जाएगा, due to which what will happen, which promotes the opening of potassium channels. The potassium channels, and inhibit the opening of calcium channel. Calcium channel जब inhibit होंगे, it reduces the presynaptic release of न्यूरोट्रांसमीटर. जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज नहीं होंगे, जिसकी वजह से जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं हुआ तो क्या हुआ कि आपका जो नर्व इंपल्सेस था प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक पे जाने वाला, तो वो नर्व इंपल्स वहां पर ट्रांसमिट नहीं होगा. सो दिस इनहिबिशन ऑफ ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स प्रिवेंट्स द एक्सोसाइटोसिस और प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. Promotes the opening of potassium channel. Potassium channel open होगा तो we know that potassium channel opening causes the hyperpolarization, reduces neuronal excitability and increases the potassium conductance, which causes the hyperpolarization and slows the inhibitory pathway and reduces the pain. Hyperpolarization होगा तो क्या होता है? Depression होता है, which causes the inhibition of pathway, activation of inhibitory pathway, जिसमें the pain perception नहीं होगा due to the action on the opiate receptors. So by acting on this opiate receptor, which are a family of G protein coupled receptors, inhibition of adenylyl cyclase decreases the cyclic AMP associated with the ion channels to increase the potassium influx. Hyperpolarization होगा, reduces calcium influx, impeding the neuron firing and transmitter release on the certain cells, mostly in the CNS and GIT. 3 families we know that: mu, delta and kappa. So when they activate the mu receptors, mu opioid receptors, they cause the analgesic activity, they cause the euphoria, and euphoria, sense of well-being, and contentment, happiness वगैरह, sedation, respiratory depression, dependence and pupil constipation. ये effect produce होंगे when a drug acts on the mu receptors. When drug acts on the delta receptor, it causes the analgesia, spinal analgesia. Acts on the spinal cord, analgesia, constipation and respiratory depression. Kappa, when the drugs acts on the kappa receptors, it causes analgesia at the spinal level, dysphoria and sedation. So those are the effects of the narcotic, those are the effects of opioid analgesics when they act on the different receptors. Thus types of the effect, thus types of the activities are produced.